हेलो जी। हाँ जी, मैं हूँ हम्टी शर्मा। एक्चुअली थोड़े टाइम पहले मैंने वो व्हाट्सएप में ऐड भी दिया था कि मेरे को एक दुल्हनिया चाहिए। वो दीपिका या कटरीना के टाइप की हो सकती है, वैसे नहीं भी मिली तो आई एम ओके। आज मैंने सुना था कि धर्मा प्रोडक्शन ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया है कि एक लड़की आने वाली है। किस टाइप की लड़की है, कैसी लड़की है, बोलने का ढंग कैसा है, मम्मी डैडी से भी मिलाना पड़ेगा मेरे को, तो पहले मैं देख लूँ कौन है। मैंने तो पहले सुना था कि जब मेरे मनपसंद की लड़की आएगी तो एक घंटी बजेगी या कुछ ऐसा, कुछ धमाका होगा या कुछ ऐसा होगा, पर इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या कोई इधर? मेरी दुल्हनिया टाइप की है क्या? इतनी बड़ी शादी है तो पंडित जी तो बनते ही हैं। तो इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर हमारे जो पंडित जी हैं इस होल शादी के, बुलाते हैं मिस्टर शशिकांत खेतान को। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब शादी इतनी बड़ी हो, बिग फैट इंडियन वेडिंग जिसे बुलाते हैं, ऐसे तो लगेंगे ही। सो लेट्स कॉल अपॉन द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, मिस्टर करण जौहर। Ladies and gentlemen, a big round of applause. Also the co-producer of this film, Mr. Apurva Mehta. Ladies and gentlemen, a big round of applause. अब जब काजी रेडी है तो मियाँ बीवी भी ऑब्वियसली ये बात में राजी होंगे। तो वरुण एंड आलिया, ladies and gentlemen, a big round of applause. इससे ज्यादा हो सकता है यार। Come on, let's give it a big round of applause. मुझे वो नाम बड़ा अनयूजुअल लगा, हम्टी शर्मा। तो मैं पढ़ने लगा एंड आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट एंड आई फाउंड इट अ लॉट ऑफ फन। तो टाइटल इनका है, सजेशन टाइटल का इनकी, बस हमने थोड़ा बहुत उसे मॉडिफाई कर दिया और दुल्हनिया बना दिया बिकॉज आई जस्ट थॉट इट वाज मोर एप्ट फॉर द फिल्म। तो लव स्टोरी हमने निकाल के दुल्हनिया डाल दी। I didn't take a selfie, I took a Humphrey. So it's not the same thing. Okay. You can't compare the two. There can be only one Kareena, as we all know that. Not only am I a huge fan of hers on celluloid, but I love her as a person. Kareena and I are extremely close, and when I say that Alia, I mean when people make those comparisons because they both have an inherent sense of a certain natural energy and a certain spark and spunk, but they're very different actresses, and Kareena has carved such a tremendous niche for herself that I don't think she should be compared to anyone. And I think it's unfair for Alia to be compared to someone who set the bar so high. She still has a journey ahead, and I'm sure that eventually she will have an individualistic charm about her, and maybe someday someone will ask us whether, oh, you're so like Alia Bhatt, and I hope that day comes very soon. Varun fights for love every week. No, serious note, because when you're fighting for love, it's a bit serious. Once, then I was in love during, I don't know, I think once. No, but it happened like when I was in college, I was in love with this girl, and her father actually didn't want me to be with her because he knew I was getting into films or something. So he told me that he's a heart patient and they come from a family which is very decent. So he told me that you should back off because I want to get her married like early and stuff. So I said, sir, nothing will happen to you and all. Let us at least try, because he's saying the heart posture always. So then eventually I think the girl didn't fight enough for love, so she only went away. That's why Azhar be married when. कब से जुड़ रहा है? अर्जुन के साथ भी 2 स्टेट्स में जुड़ रहा है। हाँ, तो अभी ऑलरेडी वरुण पे पहुंच गया। आई डोंट नो, मुझे अभी पता चला जुड़ गया है। हाँ। क्या करे अभी? नेक्स्ट फिल्म किसी और हीरो के साथ होगा। कुछ सच्चाई नहीं है इसमें। हाँ, सच्चाई है इसमें। नहीं, जैसे पहली फिल्म से कोई सच्चाई नहीं था, इस फिल्म में भी कोई सच्चाई नहीं है, और 10th फिल्म में भी कोई सच्चाई नहीं होगी, लाइफ भर कोई सच्चाई नहीं होगी। आई एम टेलिंग यू। Every day I open the papers and I'm like, Alia's in love with this boy, Alia's in love with that boy, Varun is in love with this girl. I don't know what's up to. Better still, you must ask Alia who's being sworn in today. No, I don't think so it was. But there were a few people who kind of knew me.
No, he's lying. We were shooting. Let me answer this. We were shooting in. किधर shooting करे वो that jogging part? In Borivali we were shooting, and there were these couple of. First there were some aunties and all. So I am also running. So I said कि ये aunties जा रही है. इसके बाद ठीक है मेरे बच्चों का market होगा. मैंने कहा ठीक है चलेगा. फिर कोई school छुट्टी या कुछ there were some school kids and all. They also Siddharth. Then I said ये problem है. No, but that's true. He has an incredible fan base, which we all are trying to use for this film. And Nichodo, selfishly, that he adds to all these collections. अरे भाई मैं उनके लिए रुकूंगा तो शायद मेरी होगी नहीं, तो शायद मुझे आगे बढ़ना ही था. I can't say कैसी होनी चाहिए. I hope that he eventually finds someone he loves and is happy, but I can't advise him, obviously not. नहीं, अगर वो मिल रही थी तो मैं खुशी होता, पर मुझे मेरी दुल्हनिया जो होनी चाहिए वो आलू बटर टाइप की होनी चाहिए. आलू क्योंकि वो किधर भी फिट हो सकती है, फ्लेक्सिबल है, स्वीट है, और बटर क्योंकि आलिया भट्ट की जो त्वचा है बटर की तरह है, तो आलू बटर. Not say that. That is incorrect. When he was asked by the probe, he said you should speak to Karan. Two accounts, I don't feel that this is the right platform to talk about my closeness for Imran and Avantika, who are, as I said repeatedly, extremely dear to me and will continue to be. Secondly, it's a baby shower that was more for women. It was not that it was a fraternity invite, and I don't need to be at the baby shower to wish the baby all the love possible. Secondly, wishing someone on a birthday is not something Imran would give as a quote ever. If you knew Imran dearly and closely, you would know that nobody is like this, and nobody sits and talks about who wishes who on Twitter or not. It's just ridiculous. And the fact that a story like this can actually find screen space and media space is really quite abysmal